Good morning, dear student. I'm going to start your chapter number 5 question answer, short and long question answers. So let's start. First of all, I'm discussing here chapter number 5, first question, short. That is, Shashank has entered data in a worksheet. Now he wants to add some cell entries. Means एक एक नेम यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है कि कोई शशांक नेम का एक पर्सन है जो कि डेटा को एंटर करना चाह रहा है वर्कशीट के अंदर एंड आफ्टर दैट ही वांट्स टू एडिट सम सेल एंट्रीज, कुछ एंट्रीज को एडिट करना चाह रहा है विच की शुड बी ही प्रेस टू ओपन अ सेल इन एडिट मोड. सी, व्हेन वी आर एंटरिंग द सेल entries means data in a cells we are directly entered, and if we want to open after entering the cell in edit mode we have to press F2 key. Which key? That is F2 key. F2 key. So Shank has entered to data in a worksheet and he wants to edit some entries. F2 key should he press to open a cell edit mode. Okay. Next question. Distinguish between cell and active cell. Means cell, what is a cell and what is a active cell? We've already discussed in the chapter discussion. Intersection of row and column. Intersection means जो किसी पॉइंट पर रो और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स कट करते हैं एक दूसरे को. The line between both row and column is called intersection. इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर एक रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं जिस पॉइंट पर, इज कॉल्ड अ सेल. उसको क्या बोलते हैं? सेल. सो सेल एंड एक्टिव सेल बोथ आर डिफरेंट. नेक्स्ट इज एक्टिव सेल. एक्टिव सेल इज वेयर when we want to enter some data entries. We want to enter some data entries in a active mode. In a active mode, suppose we have so many entries and we want to enter data in a particular cell, then we have to enter in a particular cell that is called active cell. जहाँ जिस सेल के अंदर हम डेटा को एंटर करना चाहेंगे उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल. ये यहाँ पर ये लाइन इंक्लूड नहीं की गई, बट आई विल सेंड द पीडीएफ ऑल्सो. दैट लाइन इज इंक्लूडेड इन ओवर देयर. ओके, I forgot here. Next is, what is formula bar? It shows the data. फॉर्मूला बार क्या होता है? जो आपका डेटा को शो करता है. और फॉर्मूला या उसको फॉर्मूला को शो करता है ऑफ एक्टिव सेल. मीन्स आपके पूरे वर्कशीट के अंदर जो भी एक्टिव सेल होगा, एक्टिव मीन्स जिसपे आपकी डार्क बॉर्डर लाइन आपकी शो हो रही होगी और जिसपे आपने माउस से क्लिक किया होगा, इज कॉल्ड एक्टिव सेल. वो उस पर्टिकुलर डेटा को या फॉर्मूला को आपके कहाँ शो करता है? फॉर्मूला बार के अंदर. इट अलाउज टू यू टू एंटर एंड मैनिपुलेट द एक्टिव सेल डेटा एंड फॉर्मूला. और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डेटा को एंटर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. मैनिपुलेट मीन्स एडिट भी कर सकते हैं इन एक्टिव सेल डेटा. मीन्स इन केस वी वांट टू एंटर सम डेटा बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार, तो हम ये फॉर्मूला बार में एंटर करने के बाद पर्टिकुलर सेल वेयर वी हैव टू एंटर मीन्स एक्टिव सेल, वो डेटा वहां पर भी आपका एडिट हो जाएगा इन केस यू विल एंटर इन द फॉर्मूला बार. सो फॉर्मूला इज व्हाट it shows the data and formula bar of active cell and allows you to enter and manipulate also. Okay, the active cell data and formula. Next question we have, which option will you use to save an existing file with new name? कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है जो आपको सेव, आपकी जो फाइल पहले से सेव है उसको फिर से न्यू नेम से सेव करने के लिए अवेलेबल है? मीन्स अगर आपने सपोज आपने कोई भी फाइल अपने सेव की हुई, सपोज यही फाइल जो मैं आपको शो ओपन करके दिखा रही हूँ, ये फाइल आपने पहले से सेव की हुई है किसी अदर नेम से, लाइक स्टूडेंट नेम से, बट यू वांट टू एंटर सम डिफरेंट नेम लाइक योर नेम. कुछ भी आपका नेम हो सकता है. स्कूल के नेम से आप स्कूल 1 के नेम से फाइल को दोबारा से सेव करना चाह रहे हो जो आपकी पहले से एग्जिस्ट कर रही है. सो यू हैव टू ओपन इन अ सेव एज ऑप्शन. ओके, आपको सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड one open bar, or we can say the dialog box will be open over there.
You have to enter new name and click on OK. New name will save the same file in your options. Okay. Next question we have, define the name box. अब ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर. Name box is what? Where it displays the cell reference address. Reference means जो address होता है. Suppose I am entering in a cell C2. C2 is what? C is a column name and 2 is a row number. So column name and row number, combination of row number and column name is called the address of particular cell. So name box is what? जहाँ भी हमने click किया होगा means the active cell. जिस भी एक्टिव सेल पर हमने क्लिक किया होगा उस एक्टिव सेल का नेम, एड्रेस, रेफरेंस आपको क्या कहाँ शो होगा? नेम बॉक्स के अंदर. ओके, फॉर एग्जांपल हियर गिवन A1. A1 is what? Name box, address. Okay, what do you mean by a range of cell? Range means कि कोई ना कोई range, suppose 1 to 5, 1 to 7, whatever, randomly we can take pick from here. And range of cell is what? A group of adjacent cell. Adjacent means जो continuous में चल रहा हो, like 1 to 5, 7 to 9 means continuous. After 7 will come 8, 8 after 8 will come 9. That is called adjacent. A group of adjacent cells is referred to as a range of cells. ऐसे ग्रुप को जो एडजेसेंट सेल का ग्रुप होता है और वो किसको रेफर करता है? रेंज ऑफ सेल्स को. ओके, I hope this is clear to you. Otherwise, you can ask from by call also. Okay. Long answer here I'm discussing. First question we have, what is the difference between a workbook and a worksheet? I've already discussed in the chapter explanation this point. What is a workbook and a worksheet? Like, for example, your book from you are reading in a like computer, Hindi, English, whatever. This is called like workbook in our Excel file, Excel language. Excel language में हम उसको क्या बोलेंगे? Workbook. And a worksheet. Worksheet is what? Pages of the book. आपकी जो book के अंदर pages होता है is called the worksheet. Excel, how we can write this? Excel file. Excel file is known as workbook. जो आपकी Excel file होती है उसको क्या बोलते हैं? Workbook. By default, a workbook holds one worksheet. By default सिर्फ उसके पास एक ही worksheet होती है. You can add or delete the worksheets in a workbook. आप कितनी भी delete कर सकते हो, कितनी भी आप उसके अंदर add कर सकते हो as per the requirement. A large sheet contains. See here. Here's a so much long question answer from the first, but it is only the purpose of you understanding. So you can write whole answer. You can write whole answers because after writing these answers you have to read out one or two times so that you can easily understand what I want to say. A large sheet that contains a grid of rows. एक ऐसी sheet जिस पे grid है. Grid means boxes. आप boxes को grid बोल सकते हो. Grid of rows and columns in which data is entered. जहाँ पे data को enter किया जाता है is called a worksheet. So now you understand what is a workbook and worksheet. A large sheet that contains a grid of rows and columns in which data is entered is called worksheet. I hope you understand this thing. Next question we have, write the steps to start the Excel. See, all things are same. Excel, Word, सबका मेथड सेम है. आप कैसे स्टार्ट करते हो उसको? Steps to start the Excel. Click the start button. First of all, we have to click on start button and click the Microsoft Office 2016. आप जो भी आपके Microsoft Office आपके पास वर्जन हो, आपको उस वर्जन पे क्लिक करना होगा. Something like I have two versions in my system, 2016 as well as 2010. Next is 2007 and 2010. Click the all apps. आपको all applications पे click करना होगा. Apps stands for applications. Click the Excel 2016. At the last, you have to enter the software with whatever you want to open. So this is called the steps to start the Excel. कैसे आप इसको start करेंगे? Okay.
Next, how will you modify the data of a cell? Write the steps. आप किसी भी डेटा को सेल के अंदर कैसे मॉडिफाई करेंगे इसके आपको स्टेप्स लिखना है. Here I am writing by the help of comma, not a numbering. See, to modify the data, bring the pointer on a cell. सबसे पहले जो हमारा पॉइंटर है वहाँ वो हमें कहाँ लेके जाना होगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर. If we want to enter the or modify the data which is to be edited, जो भी हमें edit करना है, डबल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक करना होगा एंड मेक चेंजेस, और हम उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस टू राइट मॉडिफाई द डेटा इन अ सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज एक्सेल? एक्सप्लेन एनी 5 टास्क दैट यू कैन डू इन एक्सेल. आपको पहले ये बताना होगा व्हाट इज द एक्सेल. वी हैव लर्न दिस थिंग मैनी टाइम्स. We have learned in 5th standard, 6th standard also it is come. Excel is what is a very popular spreadsheet program. It allows you to create, first of all, create and maintain the data in a tabular format. You all understand what is a tabular? That is table-like structure. With a table means rows and columns combination. This is called, it is allows you to create and maintain the data. Maintain means हम उसको maintain कर सकते हैं, like edit करना, time to time उसमें updation करना. This is called the maintain. Okay, so Excel is very popular spreadsheet program. It allows you to create and maintain the data in tabular format. Next we have tasks that Excel can be performed. ऐसे कौन कौन से टास्क है जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेशंस. सी एक्सेल इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस. हम सब सारा कुछ वर्क उसमें किस में करते हैं? कैलकुलेशन पर्पज से करते हैं, मैथमेटिकल पर्पज से हमेशा एक्सेल को ही यूज करते हैं, बिकॉज हियर सो मैनी फंक्शंस व्हिच वी कैन यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सेल. Next is creating charts. I have already told you this thing. Charts means जो भी हम डेटा अपने tabular format में arrange करते हैं उस डेटा को we can make in the form of charts also. I will show you this thing in a practical how we can make the charts. Okay. Next is storing data. अब store कैसे करते हैं डेटा को? Already we can do this. Like store करना डेटा, कैसे स्टोर करेंगे? बहुत सारा डेटा है उसको सेव करा एंड इन द फ्यूचर यूज, फॉर द फ्यूचर यूज वी कैन स्टोरिंग and using in the future. Sorting also we can do this thing. How to sort? Like alphabetical structure और numbering structure हम कैसे भी उसको sort कर सकते हैं, A to Z, 1 to 3, whatever want. Filtering means जितना भी हमें essential data हमें चाहिए होता है, need होती है, उतना हम उससे filter करके शो कर सकते हैं. एंड अदर अनयूज डेटा वी कैन हाइड. ओके, अनयूज जो डेटा होता है उसको हम हाइड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल द एक्सेल. नेक्स्ट इज ब्रेन टीजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव complete the word that form a correct feature of PowerPoint. Here we have to tell the feature. First is given here only O and T in your book. We have to complete like worksheet. Okay, this is related with worksheet. Second is we have page break. Page break means हमें बहुत सारा डेटा है, हमें उसको multiple pages में divide करना. We have to use the feature that is page break. Third is formula bar. Formula is bar is what? Where we can add it or write the data or formula. This is called formula bar. Workbook. Workbook, all you know that all worksheets are available in workbook. Cells. Worksheet is fully depend on cells. The combination of cells we can say the worksheet. There is so many type of rows and columns. These all are the work of brain teasers. Next is the following are the steps to open an existing workbook in Excel. Order them by putting numbering 1 to 5. See here I am writing here 1 to 5 numbering. What we want to do, click the file means number 1. Second is click the browse, हमें browse पे click करना होगा. Third one is select the open option. Open option click बाद we can go for desired location and file name.
And last one, click the open button to open files. So these all are the numbering for correct numbering for opening the existing workbook in Excel. Thank you so much. I will send you the PDF also on next day. Thank you.